हाउ टू मेक कार एनिमेशन लाइक दिस। तो आपको सिलेक्ट ऑल कर देना और सिंपली प्रेस डिलीट एंड सर्च कार। मैं रोल्स रॉयस गोस्ट लेने वाला हूँ। ओके, ये तो अभी इसको देखिए ये डाउनलोड हो गया है। इसको सिलेक्ट ऑल कर देना और सिंपली एस प्रेस करके इसकी साइज बड़ी करनी। ओके, अब हम लेने वाले ब्रिज। सिंपली टाइप ब्रिज। ओके, मैं ये वाला लेने वाला हूँ क्योंकि ये इसमें सारे एलिमेंट कर दिया। कार को थोड़ा स्केल करने वाले हैं, मतलब छोटा करने वाले हैं, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे। प्रेस एस। अभी आप इसे अंडू करने के लिए सेंटर प्लस जेड। स्केल देता है। Yes, fine, this size is fine. Okay, अब जब सिंपली हम इसको थोड़ा पीछे लेंगे, इतना पीछे सही है। और हम इसका फ्रेम रेट रखेंगे 60। ओके, अब हम करने वाले इसका कार रोटेशन। ये थोड़ी ऊपर उठी हुई है, इसको थोड़ा नीचे करना है। सही, अभी सिलेक्ट उसके टायर को सिलेक्ट करके सिंपली डॉट दबाना और उसके ग्रिल को सिलेक्ट करना। तो आइटम में जाना है रोटेशन। रोटेशन में हैश फ्रेम -200 इतना से एंटर कर देना। अभी देखेंगे आप ये रोटेशन करने स्पेस दबाएंगे तो चलने लगेगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा स्केल कर देंगे हम। स्क्रीन पे कर्सर लेके आना और आई टाइप कर देना। ओके, आई टाइप करके क्लिक करना लोकेशन रोटेशन, इसको क्लिक कर देना। तो यहाँ एक की फ्रेम आ जाएगा। और एक फ्रेम का इसको यहाँ लेके जाना और इसको सिलेक्ट करके सिंपली ड्रैग कर देना एंड तक उसको। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अभी इधर आई प्रेस करके एक और फ्रेम डाल देना है। तो आप देखेंगे मूव करने लगी। देखो सक्सेसफुली मूव कर रही है। हम अब करेंगे कैमरा को कैमरा सेटिंग। सिंपली आई क्लिक कर ऑब्जेक्ट करके डॉट लो एंगल थोड़ा ले लेता है। सेंट्रल प्लस ए करके शिफ्ट प्लस ए प्रेस करो और जाओ कैमरा। अगर कैमरा को हमें इस एंगल पे लाना है तो सिंपली सेंट्रल ऑल्ट और नंबर का 0। ओके, ये इस एंगल पे आ गया कैमरा। अभी हमको शिफ्ट और एस्केप के नीचे वाला बटन उसको क्लिक कर देना है। तो आप ऐसे एंगल को कैमरा को मूव कर पाओगे। ओके, आप सिंपली WADS इसको करके आप कैमरा को मूव भी कर सकते हैं। अभी इसको कैमरा के साथ पैरेंट साइड करना है। पैरेंट साइड मतलब ये कार को फॉलो करने लगेगा। ये देखो अभी फॉलो नहीं कर रहा। इसे सिंपली वापस आना और सिलेक्ट योर कैमरा एंड शिफ्ट प्रेस करके कार को सिलेक्ट कर देना। सेंट्रल प्लस P दबा के ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, इससे वो पैरेंट साइड हो जाएगा। इसे फॉलो करने लगेगा। लुक एट दिस। अभी हम करने वाले हैं इसको कैमरा में एनिमेशन। तो सिंपली अभी कैमरा को पूरी वीडियो आगे कर देने की और शिफ्ट और एस्केप का नीचे वाला बटन क्लिक करके यहाँ कैमरा को मूव कर देना। मुझे अभी ये एंगल चाहिए। ये एंगल क्लिक करके यहाँ आई क्लिक करके की फ्रेम डाल देंगे। ओके, ऐसा ही आगे और ओके, अभी हम देखेंगे हमारा कैमरा एनिमेशन कैसा हुआ। इसको प्ले करके देखो। ये देखो आप देख सकते हैं कैमरा एनिमेशन कैसा होगा। कलर पे क्लिक करके इन्वायरमेंटल टेक्सचर ओके कर लेना। और यहाँ ओपन का बटन है, उधर वहाँ करके आपको जो चाहिए वो आपको पिक डाल लेना। जैसे कि मैं डालूंगा दुबई का। ओके, ओपन इमेज।
अगर आपको इसका एनिमेशन रेंडर इमेज देखना है तो आप सिंपली इसे स्टॉप करेंगे इस पोजीशन पे और जाएंगे रेंडर इमेज. ओके, योर एनिमेशन सीन लाइक दिस पिक्चर. तो गाइस हम इसकी बनाने कैमरा से यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर देना है. फोकल लेंथ करनी है हमें आपको जैसा एंगल चाहिए वाइड एंगल और लॉन्ग में सही रहेगा. हम इसे 43 कर देना. ओके, तो सिंपली हमें रेंडर एनिमेशन करना है. तो कंपोजिटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रहा था इसलिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो रेंडर एनिमेशन अभी इसे एनिमेशन होने देना है.